coming with a lot of hopes that things will automatically fall into place, and Hmm. getting a big reality check in the first week as well. That team member the, he showed me his CV, and I was so scared by it कि भाई there is a reality check that DU gives you a freedom but not a hand holding, like बिल्कुल. nothing will fall into place if you don't work for it. Yeah. ये है कि सेम कॉलेज, सेम कोर्स, सेम बैच के स्टूडेंट्स के आउटकम्स भी एकदम अलग होते हैं. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Vidushi Arora. I am a first year BCom honors student at SRCC, and today we have with us for our episode 2 of Elevate, we have with us Harshit Goyal, who is a third year BCom honors student at KMC Delhi University. Harshit has been a 9 CGPA holder in BCom honors, and he has interned at ITC. He's been placed at Futures First already. He has been the former president of the Round Table Society at KMC, as well as been the secretary general at KMC MUN. Apart from this, he has been always exceptional in his academics with 97.6 in class 10th and 97.8 in class 12th. So we have here Harshit with us to discuss about his experience at Delhi University, to guide you all about how college life actually is. So I welcome you to this episode. And yeah, how do you feel? First of all, thank you for your warm introduction, Vidushi. And honestly, feeling quite a lot. A first-year-old guy who didn't want to come to KMC at first, but now is currently in his last semester. So feels a lot overwhelming, exciting, and a bit nervous as well because leaving it all a bit too soon, I feel. So, yeah. Okay. So, like, before I come with my questions up, like a formal, I've introduced you already, but if I ask you, like, for the audience, how would you introduce yourself? Or how would you like to start with your experience at Delhi University? Or what is something that you have in your mind that we'll be talking about today? You know, what I think has been my experience at Delhi University is coming with a lot of hopes that things will automatically fall into place, and Mm. getting a big reality check in the first week as well that nothing will fall into place if you don't work for it. Yeah, So, this is what everyone should realize when you come to DU. लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी या किसी की भी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वंस यू गेट इनटू अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी थिंग्स विल ऑटोमेटिकली गेट अलाइंड अकॉर्डिंग टू यू. एक yeah, once you'll get a proper guidance, you'll get a career clarity, and there will be a defined roadmap. But it is nothing like that, to be honest. बिल्कुल बिल्कुल There's a reality check that DU gives you a freedom, but not a hand holding. Like बिल्कुल. when we हम्म. come from school to the college, हमें एक आदत होती है एक स्पून फीडिंग की, कि हम्म. टीचर्स इन स्कूल हमें एकदम सब कुछ दे देते हैं कि अच्छा इस चीज को यहाँ से करो, इस चीज को यहाँ से करो. बट थिंग्स आर नॉट सेम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव ऑन योर ओन, क्योंकि अगर आप खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होगा. Yes, प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल, दे विल हेल्प यू, बट जब आप उनके पास जाते हो, ठीक है, सीनियर्स आर वेरी गुड, ठीक है, बट वो तभी गाइड करेंगे जब आप उनसे क्वेश्चंस पूछोगे. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न बिफोर गेटिंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि इनिशिएटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू टेक. एंड क्योंकि व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि इवन इफ टू स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द सेम बेंच, both will have completely different journeys, बिल्कुल. just because of the fact that one हाँ. has been very proactive and other has been thinking that things will automatically fall into place. So one thing is that I realized that pretty early, that unless you take the ownership of your time and decisions, no one is going to help you. आई थिंक so this is so honest because मैं फर्स्ट ईयर से आई हूँ. अभी अभी हुआ है, फर्स्ट सेम हुआ है. तो आई कैन रिलेट टू दिस क्योंकि हम बहुत, हमें लगता था कि अच्छा अच्छा कॉलेज मिल गया तो अब सब कुछ हो जाएगा, बट द रियल जर्नी स्टार्ट्स आफ्टर. Okay. Exactly. So, like, when you came to Delhi University, what was your biggest expectation that you had in your mind? And what turned out to be the biggest reality check for you? Like, for most of our first years, हमें लगा था वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली कॉलेज लाइफ होगी हमारी भी, पर ऑनेस्टली हमें वो दिख नहीं रही है. या तो बॉलीवुड ने सबको बहुत बिगाड़ के रख दिया इस मामले में. तो सब एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि कॉलेज लाइफ होगी, फन होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होगी. ठीक है, बट Yeah.
देयर आर, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू टू बी ऑनेस्ट कि तुम अपनी लाइफ कैसी बनाना चाहते हो कॉलेज में। तो मैं कुछ खास इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आया नहीं था डीयू। बट जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, मे बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कि भाई ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, क्लास में एसी है एंड वी हैव डॉग्स रोमिंग अराउंड इन द कैंपस। तो मतलब ये क्या है? तो दिस वाज द फर्स्ट रियलिटी चेक। जो मेरी एक्सपेक्टेशन मतलब इतनी तो नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, बट जितनी भी थी उससे ये सबसे डिससैटिस्फाइंग मोमेंट था मेरे लिए। इट टुक मी अराउंड अ मंथ टू Hmm. कोप अप विद इट ऑल। सो Okay. या। Mainly expectation थी कि it will be more still fun, but fine. Like SR is not fun, honestly. Okay. For someone who's outside Delhi University, like आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त हैं. A lot of people have this कि Delhi University वाले सिर्फ chill कर रहे हैं. So how would you honestly describe them, the life at Delhi University, except for the fests and reels? किसी को honestly बताना है कि what is happening at Delhi University? For anyone who is not from Delhi University in the audience, or who wants to come, the class 12th batch, what would be your honest कि क्या हो क्या रहा है, so that they don't have expectations like us? तो सोशल मीडिया पे डीयू की लाइफ काफी ग्लैमरस लगती है कि इनके तो Yeah. हमेशा फेस्ट चलते रहते हैं, इनके हमेशा इवेंट्स चलते रहते हैं। बट ऑनेस्टली डीयू इज अ लॉट कंफ्यूजिंग एंड अ लॉट Mm. कॉम्पिटिटिव एज वेल। बिकॉज Yeah. यहाँ सिर्फ फन नहीं होता, यू गेट इन टू सेल्फ डाउट, यू गेट रिजेक्शन एंड यू योरसेल्फ डू कंपैरिजन अलॉन्ग विद योर बैचमेट्स। आपके पास लोग होते हैं जो इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, अपने स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन्स कर रहे होते हैं, और कभी कभी लगता है कि हम एकदम पीछे रह गए हैं। You are surrounded by extremely talented people, which can be inspiring, but also intimidating as well. क्लासरूम से ज़्यादा लर्निंग आई फील कि क्लासरूम्स के बाहर ही होती है। यू गेट टू लर्न अ लॉट इन सोसाइटीज ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप्स वाइल टॉकिंग टू योर सीनियर्स। तो जब भी कोई भी ये मतलब डीयू की सिर्फ रील्स देख रहा है कि हाँ ये सब फेस्ट में नाच रहे हैं, Mm. तो एक चीज का ये चीज ध्यान रख के आना कि डीयू इज अ लॉट कॉम्पिटिटिव एज वेल। डीयू डजंट स्पून फीड यू एज आई अर्लियर मेंशन, इट टेस्ट हाउ इंडिपेंडेंट यू कैन बी इन हैंडलिंग योर फ्रीडम। मतलब सब कहते हैं कि यार एक बार घर से दूर चले गए तो हमें फ्रीडम मिल गई। ठीक है, वो फ्रीडम लेकिन एक महीने तक तो अच्छी लगती है, बट इफ यू डोंट टेक इट हाउ इट यू शुड टेक इट, तो इट्स एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम। I think so. This is so important, like the point you mentioned, that how you handle your freedom. Um, Last day, a few days back, I had a call from a junior, and they were like, "Ki, I'm confused in what career to pursue, a 12th class student, not because there is a lack of options, but because there are so many options." राइट। And I think so that becomes so important, that how do you handle your freedom? I resonate this with a lot because a lot of people do not know they've got the freedom, but how to make the best of it. That is something they don't know. Yeah. Exactly, Okay. because once you get freedom, you have so many paths available, and you could choose any of them because there's no Hmm. one to guide you. You are on your own. But बिल्कुल. the real test is that only because you have to take the right decisions. I think that this will be so helpful for people जो आ रहे हैं या जो अब CUET देंगे कि how actually life proceeds here. Okay, I've got to ask a very highly debated question now. Do you think the college tag in Delhi University or in any other sense matters a lot? Like if you're being from a tier one college, both of us, do you think it matters, or what matters more is what you do beyond it? I would be lying if I say college tag doesn't matter, but the college tag only helps you till the first filter. It might get Yeah. you, it might help you to get your CV noticed or help you to get that first interview call. But after that, only skills, mindset, and the execution take over. Because what truly matters is how you use the environment that Delhi University provides you, whether it's exposure, competition, or access to the people and Yeah. opportunities as well. Like someone from a top college who remains passive will always lag behind in comparison to someone who builds skills and experiences, even from average colleges. Like DU में अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, बट ग्रैब सिर्फ वही करता है जो एफर्ट डालता है। Yeah. अगर आप कॉलेज टैग के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा।
अल्टीमेटली कॉलेज में क्या सीखा, क्या आपने बिल्ड करा एंड कैसे यूज करा, वही मैटर करेगा एट द एंड। अगर आप सोचोगे कि यस अब एक बार मैंने मेहनत कर ली, नाउ आई एम इन टीयर वन कॉलेज, तो दैट इज ओनली गोना हेल्प यू टिल अ पॉइंट। बट अगर आप उसको आगे जाके यूटिलाइज नहीं करोगे, आप टीयर वन कॉलेज में जाके जो आपको एक्सपोजर मिल रहा है, जो आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है, अगर आप उसका यूटिलाइज ही नहीं करोगे, तो वो कॉलेज का कोई फायदा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। Okay. Right. So, like, for someone who's not in a tier one college, what would you suggest them? How do they make the best of their college life? What skills, what courses, like, what should they do? Because considering the market today is so volatile, what would you suggest them from your experience? कि आई वुड If सजेस्ट you're them, not, या if आई you're वुड not सजेस्ट in a them top don't only run college, after क्या करें? academics. Hmm. Yeah, I would suggest not only run after academics, there are many other things to focus on which are common to all the colleges. Like आज की डेट में अच्छी सोसाइटीज हर ड्यू के कॉलेज में आपको मिलेंगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट टू लर्न फ्रॉम देम। इवेंट्स हर सोसाइटी में होते हैं, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट टू पार्टिसिपेट इन देम। कॉम्पिटिशन्स, अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से भी हो, यू कैन ऑब्वियसली पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द टॉप कॉलेजेस। दैट विल Hmm. हेल्प यू अलॉट इवन इफ यू डोंट विन एट द बिगनिंग स्टेज। इट विल हेल्प यू गेन एक्सपीरियंसेस एंड लर्न from your mistakes in the coming competitions as well. So that is what makes a difference. And honestly, what I think is that while grabbing an internship, there is not much relevance to the college. Like as earlier mentioned, it is only the first filter that could help you. But after that, it is only your skills that can matter. So you could pursue some online courses, do some certifications, and that is going to help you a lot in your career. All right. Like, connecting to what you said, अगर आपने भी societies की बात करी, like कि every college has some good societies, and I think so एक societies को लेके बहुत ज्यादा hype है दिल्ली यूनिवर्सिटी में society culture को लेके. How do you think that someone in the first year would choose the right society for them without getting confused? Because there are a lot of colleges where you do not get a chance to enter societies in the second year. You got into you got into first year, and that's what you have to continue. So before coming to college, or even if we come to college, how does the first year student, जिसको अभी इतनी कोई knowledge नहीं है, decide कि this is the right society for me, और ये टॉक्सिक नहीं होगी आगे जाके, और ये मेरे से सिर्फ टाइम पास नहीं करा रही है, या सिर्फ एक्चुअल स्किल गेनिंग होगी नहीं होगी, वो पहले महीने में जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो हाउ वुड दैट पर्सन डिसाइड? You know what I think is that the biggest mistake freshers make is that they join the society for the name rather than the learning. You know, instead of asking like what society is prestigious in our college, students should focus upon like what work I'll be doing here and what are the skills that will I gain in the next 6 months. You know, the right society for you is where you get the real responsibility. सर्टिफिकेट्स तो आपको हर सोसाइटी दे देगी, बिल्कुल. बट आपको एक जो रियल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ कुछ कुछ सोसाइटीज में मिलेगी। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ केएमसी, वी हैव मोर देन 50 सोसाइटीज इन हियर, ठीक है, एंड ऑब्वियसली एज अ फ्रेशर तुम आते हो, तो जो सीनियर जिस सोसाइटी का है वो उसी सोसाइटी की बात करेगा। ही बी बिल्कुल, लाइक कि और वो दिस सोसाइटी दूसरी इज द बेस्ट। दूसरी वाली को डिफेम भी करेगा, और फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल क्योंकि आधा जाना तो इसको अच्छी बोल रहा था, फिर दूसरा मिला वो बोल रहा है ये अच्छी नहीं है. तो यू गेट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन होती है ये तो. बिल्कुल। एंड इसमें ये चीज होती है कि इवन इफ यू अटेंड द ओरिएंटेशन ऑफ ऑल द सोसाइटीज, तो ओरिएंटेशन में हर सोसाइटी अच्छी लगती है कि यार हाँ, हाँ. इसके सीनियर्स अच्छे लग रहे हैं, इसका काम अच्छा लग रहा है, ये काफी टाइम से केएमसी में है या किसी कॉलेज में है, तो हम्म. यू गेट प्रीटी मच कंफ्यूज्ड। बट व्हाट आई थिंक इज कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि यू आइडेंटिफाई द टॉप सोसाइटीज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड अप्लाई टू ऑल ऑफ देम, बिकॉज यू डोंट नो कि जिसमें तुम अप्लाई करोगे उस सब में तुम्हें रिक्रूटमेंट हो जाएगी तुम्हारी। बिकॉज बिल्कुल. पहले लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से आते हैं कि अरे ऐसे कैसे, मेरे को कैसे नहीं लेंगे सोसाइटी में, बट एक दो जब इंटरव्यू दो तो रियलिटी चेक मिल जाता है। बिकॉज हमें या. इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती, ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ सीवी, ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन, गिविंग एन इंटरव्यू। तो जब तुम वो पहला इंटरव्यू देते हो तब यू स्टार्ट फीलिंग अ बिट एंशियस कि अरे दिस इज गेटिंग सीरियस। लाइक व्हाट हैपेंड तो विद मी वाज, मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था, इट वाज फॉर दैट सोसाइटी व्हिच आई वांटेड टू गो इनटू बैडली. एंड क्योंकि वो फर्स्ट इंटरव्यू था और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आई डिड दैट पुअर. लाइक मैं बैड भी नहीं बोलूंगी, आई वाज लाइक आई से पुअर, मैं कुछ भी बोल के आ रही थी. एट एक टाइम तक आई वाज लाइक आई जस्ट एंड अप क्राइंग अभी. तो आफ्टर द इंटरव्यू ओनली आई न्यू कि ओके, इवन इफ आई वांटेड टू गो इनटू दिस सोसाइटी, आई एम नॉट गेटिंग इन.
because I did not perform up to the mark. तो वो होता है because we are not used to and nobody told us कि अच्छा इंटरव्यू में ये होने वाला है. ये Yeah, तो rightly said. yeah, And this एक happened. बार once you get into some societies, कि suppose you have been recruited in 3 to 4 societies, you have to give a month of time to all of them. बिकॉज एक्चुअल जो सोसाइटी की चीज़ है वो तुम्हें पार्टिसिपेट करके ही पता चलती है कि हाउ इज द वर्क कल्चर. तुम्हें दूर से दिखने में कोई सोसाइटी बहुत अच्छी लगेगी, बट वंस यू आर इनटू इट तुम्हें लगेगा कि नहीं, दिस इज व्हाट टॉक्सिसिटी रियली इज. तो Yeah. ओनली सॉल्यूशन फॉर दैट इज लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑल द सोसाइटीज दैट यू लाइक एंड देन चूजिंग द बेस्ट आउट ऑफ Okay, fine. एक और society से related question. This is something I've seen at ESA that a lot of people are running after POR. They are like किसी भी सोसाइटी का पार्ट हो जाते हैं कि हमें चलो सेकेंड ईयर में एक POR मिल जाएगी. So like you have had your internship, you have had your even your placement also. So do you think कि वो एक POR सिर्फ helps you in the internship or placement phase, or is it just another overhyped thing? it. PORs are very useful. PORs is position of responsibility for all those who don't know. Yeah, so PORs are powerful, but only if they are backed by the actual work. You know, I have served as the president, I have served as the secretary general, currently I'm the chief advisor. But what I've learned is that leadership position teaches you decision making. It teaches you accountability, how to manage people, and how do you handle the pressure. But these things only occur if you are genuinely involved into it. ठीक है Yeah. ना, जब आप पीओआर में होते हो तब आप डिसीजन लेना सीखते हो, लोग मैनेज करना सीखते हो. ठीक है, ये सब रियल वर्ल्ड स्किल्स है. अगर मतलब किसी के पास पीओआर है, बट Hmm. वो सिर्फ ये होता है कि भाई एक बार आई विल वर्क हार्ड इन फर्स्ट ईयर एंड एक बार मेरे को पीओआर मिल जाएगी, फिर एक बार तो मिल ही चुकी है, इट हैज Yeah. कम इनटू माय सीवी, तो अब अगर कम काम भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है. हम Hmm. अकाउंटेबल तो है नहीं किसी को. ठीक है ना, तो Hmm. अगर तुम किसी रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इट शोज अप वेरी क्विकली. ठीक है ना, रिक्रूटर्स एंड इवन सीनियर्स कैन टेल द डिफरेंस फ्रॉम समवन हु हैज लेड द टीम एंड समवन हु हैज जस्ट हेल्ड द टाइटल. सो Yeah. दिस इज a common mistake I have observed in my batchmates as well and in Got it. juniors as well, कि एक बार पीओआर मिल गई तो फिर इतना एंथुजियाज्म नहीं रहता उस काम को लेके. बट Hmm. अगर तुम वो काम नहीं करोगे, ठीक है, तुम अपना काम किसी और पे डालते रहोगे, तो इट एक्चुअली शोज अप कि तुम्हें जो स्किल्स एक्चुअली पीओआर से मिलनी थी वो नहीं मिली. ठीक है, मतलब पीओआर इज एक्चुअली बिल्डिंग ऑफ स्किल्स एंड एक्चुअली रियल लाइफ स्किल्स जो तुम्हें हेल्पफुल होंगी. मतलब काफी लोगों को मैंने देखते हुए सुना है कि यार सोसाइटी इवेंट तो कराती है, बट उस इवेंट का फायदा क्या है. ठीक है, इवन इफ उस इवेंट का फायदा नहीं है, इवेंट मैनेज करने में तुम जो सीखते हो दैट इज वेरी मच Hmm. यूजफुल, जो पीपल रियलाइज नहीं करते हैं. तो Got it. गिविंग 3 years इनटू सोसाइटी इज व्हाट आई हैव लर्नड इज कि अगर तुम एक्चुअल में काम नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे. Fair enough. सो यस, And पीओआरस आर वैल्यूएबल इफ यू वर्क फॉर देम. if you work with it, exactly. वही अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि बीइंग अ प्रेसिडेंट क्या किया था, so you should have a story to tell. That gets very important, एग्जैक्टली. right? Again, one more thing for the society thing because Delhi is famous for its societies. What is that one thing you have seen juniors make a mistake in related to the societies in Delhi when they come? What's one mistake, repeated pattern and mistake that you see in juniors? The most common mistake I have observed is juniors chase positions too early without understanding the basics. जैसे ही जूनियर्स एंटर करते हैं, कोर टीम को देखते हैं कि यार हमें कोर में आना है. ठीक है ना, मतलब दे हैवंट इवन लर्न हाउ द सोसाइटी फंक्शंस, बट उनको पता है कि यार मेरे को कोर में आना है. ठीक है, Hmm. मतलब दिस इज नॉट अ बैड थिंग टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, मतलब यू हैव अ विजन, यू हैव अ माइंडसेट, बट वो माइंडसेट के पीछे ये चीज होती है कि यार मेरे सीवी में आ जाएगा, ठीक है, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा कॉलेज में. दैट इज नॉट द राइट थिंग. Because once you Hmm. get a POR, it gets demanding, to be honest. You get meetings, Yeah. you get deadlines, and more importantly, you get accountability, जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में नहीं होती है. ठीक है Hmm. ना, मतलब यू आर अकाउंटेबल जस्ट टू योर सीनियर, बट once you get into a core team, you are accountable to all the juniors, you are accountable to the faculty, you are accountable to your college. तो यही चीज है कि रियलिटी यही है कि सोसाइटी का, एज अर्लियर मेंशन, कि फायदा तभी मिलता है जब आप कंसिस्टेंट हो, अपने काम को सीरियसली लो एंड एक जगह पर रुक जाओ. ये नहीं है कि Hmm. मतलब आई हैव सीन पीपल पार्ट ऑफ 8 to 10 सोसाइटीज इन देयर फर्स्ट ईयर. ठीक है ना, तो मतलब
आप कहीं भी हम्म, अच्छे से टाइम किसी को जगह को भी नहीं दे नहीं पाओगे। दे पाओगे बिल्कुल, बिकॉज एवरी बिल्कुल। सोसाइटी सो हैज इट्स ओन फर्स्ट, कोर्स. हाउ या विल यू एग्जैक्टली, मैनेज? सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू बिल्ड योर स्किल एंड क्रेडिबिलिटी। PORs will automatically come to you. All right. Okay, so now shifting from the society aspect to something which is very demanding and very confusing to a lot of students. Specifically, if I talk about the commerce domain, we have a lot of things to do. Like someone says, do a professional course, someone says, go for higher studies. Some might say, ki, do some short courses, build your skills, do internships, and you'll get a placement. There are so many fields. We have marketing, finance, HR, product management, finance. Like, how do you decide? And how did you decide it for you that this is what I want to go? And when did you start deciding this thing? करियर क्लैरिटी कभी भी इंस्टेंटली नहीं आती है, ठीक है ना, अनलेस Yeah. तुम कॉमर्स से हो एंड यू आर डिसाइडिंग कि नहीं मेरे को CA करनी है, ठीक है ना, तब तो यू स्टार्ट जस्ट आफ्टर योर 12th, ठीक है ना, बट अनलेस यू आर नॉट परस्यूइंग CA तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक आई वाज आल्सो एक्सप्लोरिंग रैंडमली, ठीक है ना, ट्राइंग थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। बिकॉज Yeah. हमेशा जब भी हम आते हैं, आई गेस बेस्ट स्टेप भी यही है कि यू नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है व्हाट यू विल सी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो यू हैव टू सी एट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। सो मेरा भी यही था, पहले थोड़ा एक्सप्लोरेशन फेज था, डिफरेंट सोसाइटीज, रोल्स, इंटरेस्ट, ठीक है ना, बट ये सब मैं ट्राई कर रहा था बिना क्लियर डायरेक्शन के कि व्हाट आई वांट टू डू। बट टर्निंग पॉइंट एक तब आया कि जब मेरे को रियलाइज हुआ कि कॉलेज का टाइम काफी फास्ट निकल रहा है, ठीक है ना, एक अभी देख लेंगे वाला माइंडसेट होता है, वो काफी रिस्की होता Hmm. है, ठीक है ना, कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है ना, ये बहुत टाइम करते करते आई एम इन माई लास्ट सेमेस्टर राइट नाउ। तो इसकी मतलब इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी, यू शुड टॉक टू योर सीनियर्स, यू शुड लर्न देयर रियल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज खुद अप्लाई करो इंटर्नशिप्स के लिए, ठीक है, खुद अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करो एंड रिजेक्शन फेस करो। रिजेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट आर मोस्ट आई ओपनिंग फॉर यू। वरना हम अपने माइंडसेट में होता है कि यार हम तो बेस्ट है, ठीक है ना, हम तो जहाँ अप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा। मिल बट जाएगी वंस यू बिल्कुल. अप्लाई टू थिंग्स, या वंस यू अप्लाई टू थिंग्स यू रियलाइज कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर बेटर देन यू, ठीक है ना, उसके बाद वंस यू फेस रिजेक्शन तुम्हें करियर क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू होती है, ठीक है ना, मुझे आया कि मतलब करियर क्लैरिटी किसी को भी एक दिन में नहीं आती है, ठीक है, देयर इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, you make mistakes, and you get basically a self reflection of yourself, and that is what builds into a career. Alright, ठीक है. Interesting. Like, एक और बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है कि हाउ डू यू चूज बिटवीन पैशन एंड स्टेबिलिटी? And this is more so for someone who is into a top college. They think that our college brand or our college tag has a backup for us. So let's just try building on our passion. And if it does not work, we might use our college tag, we might use our benefit from our college. Or there's a thought process that goes by ki, what if I don't try for my passion? So how does one choose between passion or stability or what is in demand? Like, did you have any time where you were confused between something like this? Or if you know someone who was? What I believe is that college is the right time to experiment with your passion, right? But also you have to simultaneously build a safety net, because if you Mm, don't succeed in then you should always have a plan B. yeah. you know Passion versus stability should never be an either or option, ठीक है ना, कि या तो पैशन या फिर स्टेबिलिटी, ये कभी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव इन बैलेंसिंग बोथ, एक्सप्लोर व्हाट एक्साइट्स यू, बट एटलीस्ट यू शुड डेवलप वन मार्केट रेलिवेंट स्किल, बिकॉज एज यू ऑलरेडी मेंशन कि जॉब मार्केट इतना अच्छा नहीं चल रहा आजकल, ठीक है ना, तो Mm, एक मार्केट रेलिवेंट स्किल जरूर होनी चाहिए कि दैट इंश्योर्स योर फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल स्टेबिलिटी, स्पेशली इन द लॉन्ग रन। इन एन आइडियल वर्ल्ड एवरीवन फॉलोज देयर पैशन, ठीक है ना, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग पैशन विदाउट mm, स्किल, ठीक है ना, एंड पैशन विदाउट प्लानिंग yeah. is not very beneficial in the long run. Interesting. Okay. Moving forward, I have a very interesting question for you. There's a very much debate happening about that the education system is shifting towards skills.
So, what are those top 2 to 3 skills as per your experience that everyone should have, regardless of what career path they choose? First of the skill I believe is communication, being able to express your ideas clearly, confidently. If you're not able to communicate your ideas clearly, then it becomes of no use, to be honest. Second skill Mm, would be problem solving ability, thinking logically and approaching problems with a structure. Because there will be many problems arising during your college life and even during your journey as well. So you should be able to solve those problems without having much of the stress. And third is discipline right. and consistency. I believe this is the most underrated skill. Talent matters, but Yeah, consistency compounds the result over time. agreed. Consistency and discipline beats talents every time. So yeah. I, yeah, like this is very important because they say consistency will always beat motivation. It always intensifies. So, all right, I think that this is something very useful for the people who are coming, who are in their +2. I did not find this type of content when I was looking out to enter Delhi University. And that is what led me to start that, okay, we need to have conversations. Okay, moving forward is when should someone, like, according to you, start applying for internships? And when they are applying for internships, what is something that they should focus on? Like, is it the role, or is it whether it is paid, or is it to get into a good company? Like, what should be the focus, and when should they start? Students should ideally start applying from the end of the first year for the internships, but the preparation should begin much earlier. Internships are not about earning in the initial phases, but they Yeah. are about learning how the real world works. Mm, Like, I would divide my answer into two phases. Like, in the first phase, when you don't have much of the skills and you don't have a fixed career path, like you are very confused in between two, three options. If you are getting a good company role, like a company who is very reputed, I would prefer that. Because even if if I'm not even clear about what career I will pursue in the coming 2 to 3 years, so it's better to have a good company name in your resume. Whereas if I have given some time and if I know that this is the particular flow, this is a particular role I would like to do, then I would definitely focus on the roles and the work I'll be getting in the particular company. Like, I believe that before applying, students should build basic skills. They should learn about MS Excel, MS PowerPoint, Canva. Like, these are the basic skills everyone should have. Understanding the role that they want. And stop applying randomly without direction. Like, हमने LinkedIn खोला and एक एक करके अप्लाई करके सब पे अप्लाई कर दिया. ठीक है yeah. ना. एंड इंटर्नशिप का मेन पर्पस पैसे या फिर सर्टिफिकेट नहीं होता. ठीक है ना. इट शुड बी लर्निंग. इसलिए अप्लाई करने के लिए बेसिक स्किल्स बिल्ड करना, ठीक है ना, रोल को समझना एंड क्लैरिटी बहुत जरूरी है. ठीक है ना. जब आप थोड़ी प्रिपरेशन के साथ अप्लाई करते हो तो इंटर्नशिप आपको सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं देगी, बट इट विल गिव यू अ रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड डायरेक्शन एज वेल. Mm, सो दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना. क्योंकि अगर इफ यू हैव बिल्ड अप अ mm, गुड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड्स, दैट इज mm, ऑटोमेटिकली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट्स. ठीक है ना. एंड yeah. प्लेसमेंट के कंपैरिजन में इंटर्नशिप का स्टाइपेंड उतना मैटर नहीं करता. ठीक है ना. यू वुड नॉट बी वरिंग अबाउट योर 10 to 15,000 रुपीज स्टाइपेंड पर मंथ when you will get a 15 LPA or 12 LPA job. So that is what students need to understand. Mm. Okay. Uh, हम एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप कर रहे हैं और इंटर्नशिप के लिए आजकल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं. How do you, a first year, solve that? Like, I've seen this myself. Like, when I am doing it on my own, तो मैं देख रही हूँ इंटर्नशिप है और वो बोल रहा है यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years एंड आई एम लाइक कहाँ से लाऊं इंटर्नशिप तो एक्सपीरियंस के लिए कर रही हूँ. So how does one solve that? And for a very beginner, the very first resume that you send does not have a lot of experience. So what can one add there? And how do you solve this whole system of internship experience thing? Zero experience doesn't always mean zero value. ठीक है ना. If Yeah, you haven't done internships before, you must have done some other thing. ठीक है ना. yeah. If you have been doing some society work, you have been participating in some case competitions, you have been doing content writing, research, freelancing, volunteering, or even self-initiated projects.
All these things show your initiative, and that's what companies Hmm. want from the students. As a first year student, सबका सीवी खाली होता है, मेरा भी खाली था, ठीक है Yeah. ना? बट दैट इज व्हाट कि लोग डर जाते हैं, ठीक है ना? लाइक आई टेल यू एन एग्जांपल कि जब मैं अपनी फर्स्ट सोसाइटी ओरिएंटेशन में गया था, तो उनका फर्स्ट स्टेप था कि यू हैव टू फिल अ फॉर्म एंड तुम्हें अपना सीवी अटैच करना है, ठीक है? तो आई गेट वेरी फ्राइटेंड, आई वुड से, ठीक है ना, कि भाई Hmm. ये सीवी मतलब कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली पता सबको होता है कि क्या होता है, बट जब बनाने की बारी आती है कि यार अभी तो 12th से आए हैं, हमने तो कुछ इतना कर भी नहीं रखा है, Yeah. ठीक है ना? एंड वहाँ पे कोर टीम मेंबर थे, ही शोड मी हिज सीवी एंड आई वाज सो स्केर्ड बाय इट कि भाई इन्होंने तो Yeah. इतना कुछ कर रखा है, ठीक है ना, मेरे पास तो कुछ भरने को है ही नहीं। बिल्कुल. बट व्हेन आई लुक एट द पूल ऑफ कैंडिडेट्स की सबने मोर और लेस उतना ही कर रखा है व्हेन आई कंपेयर इट विद माय बैचमेट्स, ठीक है ना? सो व्हाट मैटर्स इज नॉट व्हाट यू डिड, बट व्हाट यू एक्चुअली लर्न एंड कंट्रीब्यूटेड। एज आई सेड कि भाई कुछ ना कुछ सबने करा होता है, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू पुट इट इनटू वर्ड्स एंड व्हाट यू हैव लर्नड एंड कंट्रीब्यूटेड इन इट। सीवी तब स्ट्रांग बनती है जब आप क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस करते हो, ठीक है ना? आई वुड ऑलवेज से दैट एक दो मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस जहां आपने एक्चुअल में काम किया है और कुछ सीखा है, वो किसी फैंसी इंटर्नशिप या फिर किसी और चीज से ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, जहां लर्निंग ऑलमोस्ट जीरो होती है। All right. This is so valuable. I mean, because for someone like me who is even in first year, we need these guidance because हमें नहीं समझ में आता एक पॉइंट पे कि when we make our first series कि हम क्या डालें. हमें लगता है अरे ये तो डालने लायक चीज ही नहीं है. But when we ask a senior, they're like अरे put this, competition क्या था, सोसाइटी करी थी, put this, and we're like okay, अच्छा ये भी डाल सकते थे. So yeah, okay. Could you just walk us through your own experience of how was your internship that you did at ITC and how did you get placed at Futures First? How was that whole experience for you? Was it challenging, frightening? What did you learn? Yeah, so my internship was off campus. I didn't get it through my college, but my placement was Yeah. on campus. And the biggest myth that I have observed in the freshers or the students who are in class 12th and coming into DU is that they have an opinion that placements are guaranteed at Delhi University. Okay, so this is completely a myth. In reality, placement success varies widely, even within the Mm. same college. ठीक है ना? Yeah. काफी स्टूडेंट्स है ये मान लेते हैं कि भाई कॉलेज टैग, जो पहले हमारी बात हुई थी कि कॉलेज टैग ही उनको जॉब दिलवा देगा, ठीक है? रियलिटी ये है कि सेम कॉलेज, सेम कोर्स, सेम बैच के स्टूडेंट्स के आउटकम्स भी एकदम अलग होते हैं, ठीक है बिल्कुल. ना? स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर अर्ली बिल्ड देयर रेलेवेंट स्किल्स एंड स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है ना, डू वेल regardless of whether they are toppers or average scorers, ठीक है? your scores don't matter, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, बट दे मैटर ओनली टू अ पॉइंट। उसके बाद तुम्हारी स्किल्स मैटर करती है, तुमने क्या सीखा है, तुमने क्या करा है ओवर द कोर्स ऑफ योर 3 years, दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है? ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इज दैट ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स लक मैटर्स अ लॉट, ठीक है? ये सब लोग एडमिट नहीं करते हैं ऑनेस्टली, Hmm. ठीक है ना? What I would say is, despite performing good, you might not clear a round in one company, whereas Yeah. you might clear a round in some other company with not some best answer, Yeah. ठीक है? सो हमेशा अपने लक को भी दोष देना राइट नहीं है, ठीक है? वन शुड ऑलवेज फोकस ऑन द थिंग्स विच आर इन योर ओन हैंड्स, Yeah. ठीक है ना? वॉट यू हैव टू डू इज पुट द कंसिस्टेंट एफर्ट एंड वर्क इन टू इट, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन टू प्लेस। All right. So this was for someone who is a second year, third year person, not a first year thing. All right. Moving forward, what would be your advice to someone who's going to give CUET 2026? Like to all those aspirants for Delhi University, they have got an idea of how life looks like here. But the first step that they have to give is CUET. And what would be your take on it regarding the CUET exam, what they should do, how they should proceed, or what was your experience of it? Like I was a part of the second batch who gave CUET, and I believe CUET at my time was pretty easier in comparison to Yeah, today's. Like we had to attempt 40 questions out of 50. So I think that gives you a leverage of 10 questions. Like obviously each paper has a set of questions that are above the average level and those who are considered difficult. So we had the leverage that we could skip those questions and attempt the easy ones. yeah, So that is not what I think is
you get in the current year CUET, Yeah, right? it's compulsory. Mm. Yeah. So what I would advise the students is that कि focus on your preparation, ठीक है? But don't get disheartened about it कि यार, and don't get too anxious about it कि यार हमें स्कूल भी मैनेज करना है, and we need to manage our CUET preparation as well. And Mm. as a plus two student, uh, our society gives a lot of emphasis on board exams even after the relevance of board exams has decreased a lot. ठीक है ना? Yeah, Your admissions are purely on the basis of CUET, but or still, other entrances. yeah, exactly, but still Mm. most of the society, our parents are focused कि यार बोर्ड में अच्छे नंबर तो आने ही आने हैं, ठीक है ना, Yeah, मतलब तुम्हें लाने ही पड़ेंगे। वो तो सोसाइटल आई प्रेशर वुड, होता है। हाँ एग्जैक्टली, तो आई वुड से कि इसमें मतलब देयर इज नो थिंग टू गेट एंशियस एज वेल, ठीक है ना, बिकॉज इफ तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो योर 80% ऑफ द सीवीटी प्रिपरेशन इज ऑलरेडी डन, ठीक है। Yeah, यस, मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि बोर्ड्स में लाइक 20-25% ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, सीवीटी इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड के लिए ऑब्वियसली तुम्हें एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा घुमा के। बट वॉट आई फील इज कि मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में लाइक अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, if you are thorough with your concepts, you will automatically excel in your CUT exam. Unless yeah. you get pressurized by the exam and you lose your calm in there. बट Mm. अगर तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से है, यू आर ऑल थ्रू विद योर कंसेप्ट, तुम वो तो एक रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, कि Yeah, आज हमने अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ अपार्टमेंट वाला चैप्टर करा, तो उसमें हमने 5 क्वेश्चन देख लिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, बट वो उस तरह से क्यों होगा वो नहीं हमें पता, yeah. ठीक है ना। तो इवन इफ अगर मान लो बोर्ड में वो क्वेश्चन आ गया तो तुम सही तो कर दोगे, ठीक है, बट सीयूईटी में तुम इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि तुम लेजर बिल्कुल। अकाउंट्स बनाओ, जर्नल एंट्रीज लिखो, ठीक है ना। Mm. सीयूईटी You have विल to be बी thorough with अलॉट, the concept. Exactly. So my first advice will be thorough with your concepts, ठीक है, Mm. and also practice MCQs as well, ठीक है। अगर मतलब प्रॉपरली रिलाई करोगे कि हाँ बोर्ड्स की प्रिपरेशन से हो जाएगा तो वो तो नहीं होगा, ठीक है। यू Yeah, नीड टू बी थॉरो विद रीडिंग एनसीईआरटी मेनली, ठीक है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि जब मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो मोस्टली हमारे स्कूल में या जहाँ भी मैंने पढ़ाई करी है, मोस्टली वी फॉलो संदीप गर्ग फॉर क्लास yeah. 12th, ठीक है, स्पेशली फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। आईईडी के लिए फिर भी वी रीड एनसीईआरटी, बट Yes. मैक्रो इकोनॉमिक्स तो एनसीईआरटी कभी खोली भी नहीं है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द Mm. 90% ऑफ द पीपल किसी ने नहीं खोली होगी, Don't open. राइट। Yeah. या एग्जैक्टली, बट जब मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था सीयूईटी का, तो देयर वर मेनी कंसेप्ट्स दैट वर नॉट इवन प्रेजेंट इन संदीप गर्ग, एंड जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स थे, मतलब पेपर में आई वाज Mm. सो सरप्राइज टू सी कि भाई ये कहाँ से आ गया। बट जब Yeah. वापस आके मैंने देखा तो दोज वर एग्जैक्ट कंसेप्ट्स, एग्जैक्ट डायग्राम्स, एग्जैक्ट लाइंस व्हिच वर मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। So be thorough with the NCRT, and even in board exams like accountancy में there are many questions जो exact to exact NCRT से उठ के आ जाते हैं, they don't even change the values. So I would Yeah. say focus on NCRT, and obviously business study जैसे सब्जेक्ट में तो you have to go through each line, क्योंकि वो कहीं से भी लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा। बिल्कुल, I'll tell कुछ you भी an बना example, देते like हैं। I scored 99 in business studies, ठीक है, मेरा एक एमसीक्यू गलत हुआ था, एंड उसमें दे गेव अ लाइन कोऑर्डिनेशन के फीचर की, एंड दे आस्क्ड मी लाइक विच फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इट इज, ठीक है ना। एंड Mm. दैट लाइन वाज सो कॉमन कि वो 2-3 फीचर्स में यूज हो सकती थी, बट सिंस एनसीईआरटी में Mm. वो लाइन एक ही फीचर में लिखी थी तो वो आंसर ही ऑब्वियसली सही माना वही जाता। होगा। तो Yeah. हाँ, तो वो मेरा गलत हो गया था। तो बी थॉरो विद योर रीडिंग, स्पेशली फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स, एंड प्रैक्टिकल में भी ये मत सोचना कि हाँ हमने हेल्पिंग बुक से कर लिया तो हमारा हो गया। फोकस ऑन एनसीईआरटी, एंड ज्यादा प्रेशर मत लेना, ठीक है। फोमो जो एक चीज काफी कॉमन हो गई है लोगों में, ठीक है, कि यार उसका प्रिपरेशन इतना हो चुका है, मेरा तो अभी 50% ही हुआ है, ही इज एट 90%, ठीक है, उसने 15 मार्क्स दे दिए, मैंने तो 5 ही दिए हैं, ठीक है, उसने Yeah. 5 मार्क्स दे दिए, अरे मैंने तो शुरू ही नहीं करा है, ठीक है। तो एवरीवन हैज देयर ओन रोड मैप, ठीक है, सबकी लर्निंग स्पीड अलग होती है, सबकी कैलिब्रेशन स्पीड अलग होती है, सबके रिजल्ट्स अलग होते हैं। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर जर्नी, ठीक है, एंड गिव द old boring consistent effort, because as I earlier mentioned that obsession and Consistency. your dedication, your consistency will beat everything. Yeah. And for someone जिसने अभी अभी CUET दिया है, I guess Harshit covered everything. But there's one thing which I would like to add in कि बाकी सब सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, मतलब even after your boards.
English is something जो थोड़ा पहले से you should start working on because of the one reason because you don't have an option now. So you need to work on the vocabulary, the reading section, the difficult questions that come in. So specifically for English, you should work a little early. Baki, I guess he's covered everything. Okay, ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट लाइक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स तो हमें क्लास 12th में ग्रामर नहीं आती है बट बिल्कुल इट इज अ मेजर चंक इन लाइक सीयूटीज इंग्लिश CVT. सिलेबस सो विच या मेनी ऑफ अस आर नॉट प्रिपेयर्ड विद हमें तो होता है कि यार कॉम्प्रिहेंशन आएगा उसमें ही आंसर्स होंगे ठीक है उसमें से देख के हमें मार्क कर But देना तो दैट इज इजी yeah, the comprehensions that come in CVT are very, very different from what we do in boards. या The options are you'll see confusing yeah you'll see four options all having the same meaning but and with all different seeming wordings correct. Yeah, and all seeming yeah correct. exactly So yeah, that is something you need to, that comes with practice only. So that's why English ko pehle karna is like something people should work on. Like you gave an advice for people who are going giving CVT. Just to end up, what would be your advice to first years, like who are going into their second sem, so that they make the best of their college life? Like for someone you like know me, what would you say? come to your second semester with an open mind and a strong ownership of your journey. Don't chase the validation, chase the learning, I would say. You would explore, you would fail and reflect, as earlier mentioned, but you will also rebuild. Hmm. Delhi University doesn't make you successful, but how you use the exposure of Delhi University makes you successful. ठीक है ना जो यहाँ लोग आके Important. वेट करते हैं कि कुछ हो जाएगा तो वो टाइम वेस्ट कर देते हैं ठीक है गलतियां होगी कंफ्यूजन होगी कंपैरिजन भी आएगा फोमो भी आएगा बहुत सारा Hmm. ठीक है बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ठीक है अपनी ग्रोथ अपनी चॉइसेस और अपने फ्यूचर की अगर आप ये समझ गए तो डीयू सिर्फ एक डिग्री नहीं रहेगी बल्कि इट विल टर्न इनटू अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ वी हैव सीन मेनी ऑफ आर एल्यूमिनाइज हु आर एट ग्रेट पोजीशंस राइट नाउ ठीक है ना एंड व्हाट दे डिड इज दे पर्टिकुलरली यूज्ड यू in a way that it would help them in their career further. Yeah. So yeah, that would be my advice for all the second semester students right now. Okay. So just to end this great conversation, I have a very fun segment because there are a lot of myths around their university. So we're gonna play a small game where you need to just answer that whether this is a myth or this is a reality. I have certain statements with me, all related to, probably related to Delhi University only. Okay. So the first one is that DU life is all fun, fest, and freedom. Myth. Then what's the reality? What's the reality is yes, it's 70% fun, but you also have to align with your career goals. You also have Yeah. to put that consistent effort so that you don't lag behind. ठीक है ना अगर तुम अपने दो Okay. साल फन में निकाल दोगे तो तीसरा साल फिर तुम्हें you'll see कि everyone is ahead of you. फिर कॉलेज तुम्हारा फन करेगा. Okay. Exactly. Once you get into a top college, life is sorted. Myth because what effort you put in then as earlier mentioned कि college time will only help Yeah. you to clear the first filter if you don't Hmm. work hard after it you will eventually fall into place you'll Oh, eventually fall out. Yeah. yeah, I agree to this. Uh, Being in multiple societies will guarantee you growth and success. It will not guarantee you but it will help you to get different perspectives of different people around you so like staying into one society I would not recommend but also I would not recommend like being part of 7 to 8 societies so you should have a balance in which you can balance your societies your commitments and your academics so that you will only learn after being part of societies. All right. If you don't get into a top society in the first year, you are done. That's also a myth because how you utilize your experiences in different society like each society will give you a different experience each society will Bilkul. give you a different learning path and each society will give you a different work ethic so everyone is different in their place and everyone is the best so yeah Okay. Internships only matter in your final year. a big myth ठीक है ना बहुत what I have seen is that most of the people think कि यार अभी तो हम फर्स्ट ईयर में हैं, अभी क्या इंटर्नशिप करने की लोड है अभी तो हम सेकंड ईयर Yeah. में है जब सेकंड ईयर एंड होगा तब वी विल सी ठीक है ना बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो इज
कि तुम्हारा प्लेसमेंट प्रोसीजर जस्ट स्टार्ट्स आफ्टर द एंड ऑफ योर फोर्थ सेमेस्टर। तो तब Yeah. तुम्हारे पास इंटर्नशिप के लिए टाइम नहीं होगा। यू विल बी गेटिंग इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो व्हाट आई वुड से Mm. इज start early, prepare early, and it's good to have an internship at the end of your first year. All right. Good But also, I would like placements. to add, even if you don't have an internship, it's not the end of the world. Yeah, Nothing is the end of the world, I believe. I am a very firm believer of exactly. like what's yours will find its way to you sooner or later. No one takes it away from you. For sure. Okay, good placements only depend on your college brand. Hmm. Half myth, half reality. Because I would say that on-campus opportunities will be because of your college tag, but there are many campus opportunities as well. Because all the companies that go on campus in some of the top colleges will also have their position open for off-campus roles. So you should also apply to that. So yeah, you can also get a good placement by being in an average college. So yeah, that doesn't matter a lot, but gives you a freedom. Okay. Um, Only commerce or eco kids get good internships or placements in Delhi University. Again, half myth, half reality, because most of the companies that come to the campus have roles aligned with the those of commerce and economics graduate, so that gives you Yeah. an edge. But that's not the only thing. Like, there are many companies who come for content writing, for research positions, and what they prefer is that someone from the arts background, and supposedly Hmm. some pharmaceutical company comes, so that prefers from the science background children. So that completely depends on the role of the company. But yeah, I would say there's an edge for the commerce and economics graduate students. Okay. You must have your career figured out by the first year. No, that's completely a myth. I am still Yeah. figuring out my career even after getting placed at a company. So I would Yeah. say we are still at a very early age. I'm just 21 right now. So I would say career की एक जो stability आती है, that only comes after 25, 26. Once you Yeah. have given Agreed. a 4, 5 years of time, ठीक है ना, you will know कि And I what think you are interested in doing. I think so. It's everything, be it starting your own thing, doing entrepreneurship, be it going into a professional space, CSCFA, or you enter the corporate world, be it anything. 4 to 5 years is something that you need to give in. Then only you get to know the outcome of it. Yeah. So And yeah, one thing is very overhyped, I believe, कि सबको सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए। ठीक है ना, सबको ये चाहिए कि यार अब कॉलेज मिल गया तो अब लाइफ सेट हो जाए, अब इंटर्नशिप मिल गई अब लाइफ सेट हो जाए, प्लेसमेंट मिल गई अब yeah, लाइफ सेट हो जाए। ठीक है, बट दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। ठीक है, लाइफ कभी इस mm, तरह सेट नहीं होगी। set ठीक nahi है, यू हैव hoga. टू कॉन्स्टेंटली वर्क हार्ड फॉर इट। Okay. Everyone around you knows what they're doing. सॉरी। Everyone around you knows what they're doing. This is the myth. अमित, Yeah, व्हाट no one actually. यू बिलीव इज दैट कि तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। ठीक है, सबको लगता है कि दे आर हैविंग अ गुड करियर पाथ, यू आर द ओनली वन हु इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट, बट दैट इज नॉट ट्रू। एवरीवन इज हैविंग देयर ओन जर्नीज, एवरीवन इज फाइटिंग देयर Yeah. ओन प्रॉब्लम्स, जो कि हमें नहीं दिखती हैं। हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है कि यार आई एम स्टक इन दिस प्रॉब्लम, बट बाकियों का सही है। ठीक है, तो दूसरों का कभी सही नहीं होता। जो होता है सबके लिए अच्छा ही होता है। तो दैट इज व्हाट आई बिलीव। Okay, last few statements. Marks stop mattering after school. नॉट ट्रू। ग्रेजुएशन सीजीपीए मैटर्स, बट ओनली टू एन एक्सटेंट। ठीक है ना, इफ यू हैव अ 9 सीजीपीए और 9.5 सीजीपीए, so but you are not participating in any other activities, you are not pursuing a professional course, you are not a part of societies, you are not participating in competitions, so Yeah. that would have a less impact in comparison to someone who is having 8.5 gpa and is doing all this stuff. So marks matter, but only up to a level of time. You need connections to grow in college. Not at all. You need to do a good amount of networking, but that is for your own growth. अगर Yeah. मतलब ऐसा नहीं है कि if you are not connected with your seniors, if you are not connected with your professors, तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं। ठीक है, you can make your own career path, but obviously it gets easier. And It अगर gets तुम easier. Yeah. if you are away from your hometown, ठीक है, तुम DU पढ़ने आए हो and you are not networking, you are not making connections, then what is the use of DU? Yeah. Very true. Last question. College automatically transforms you. No, unless you take your own initiative. As earlier mentioned कि
Most Yeah. of the people, what they do is they don't even come to college. I have few of my batchmates whom I haven't seen since my first year. They only come to give exams or assignments. Yeah. So college will not be able to shape you if you don't come to college, Don't right? come to the If you college. are Yeah. participating, yeah, if you are participating in the activities, if you are attending classes, if you are meeting new people, if you are doing new things, exploring new worlds, so that is how college usually transforms you. Sure. Even I had my morning lecture today. So my teacher also told it that you are constantly evolving. Like how you talk, what was your dressing sense in first year is not the same as what it is right now. Yeah. You have Yeah. seen the people in your environment, you have seen how they dress, how they talk. So you are basically, even not consciously, but in your subconscious mind, you are trying to evolve to them. So Yeah. that is what how college evolves you, even if it is subconsciously, directly or indirectly. Yeah. Okay. So that is the end of the myth reality questions I had. Thank you so much for sparing your time and being on my channel. I believe this conversation is very helpful for someone who is in Delhi University, who wants to target Delhi University or wants to know how life here works on. So thank you so much for joining in, and I wish you all the best for what all future endeavors you have. And to all those people watching it, please do not forget to subscribe to my channel, and we'll have more meaningful conversations coming up very soon.